Hello and welcome to Administration Wise. In this video, we will look after National E-Governance Plan, that is NEGP. Source for this video is directly taken from Ministry of Information and Technology, that is MEITY. Let us quickly start our discussion. So, government has taken a large number of initiatives both at state and the central level to assure e-governance at multiple levels in order to improve service delivery directly to the public and to simplify the process to assess these services. E-governance in India has been evolved from the era of computerization of government departments and now to the finer points of governance such as citizen centricity, service orientation and transparency at various one-stop delivery centers such as Pragya Kendras, etc. Previous e-governance initiatives have played a very important role in order to shape the progress of e-governance strategy in the country for the further development due to cognizance that has been taken in order to speed up the governance implementation across the various arms of the government at national, state and local level. It is guided by common vision and a common strategy to save the cost through saving of core and support infrastructure, enabling the interoperability through standards and presenting a seamless view of government to the citizen. G2C, that is G2C. The e-governance program NEGP is a holistic view. It is a holistic view of e-governance initiatives across the country, integrating them into a collective vision and a shared cause. It is a कलेक्टिव विजन एंड शेयर्ड काउज। इसके पीछे का आइडिया है कि मैसिव कंट्री वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि हम लोग रिमोटेस्ट विलेज तक पहुंच सके in order to evolve the large scale digitization of records and enabling it to the easy access over the internet. Ultimate objective अगर देखा जाए ई गवर्नेंस का is to bring the public services closer to the home, is to bring public services closer to the home of the citizen, and articulate in this vision is the statement of NEGP. It also works in order to make the all government services accessible to the common man in his locality through common service delivery points, outlets, and ensures the efficiency, transparency, and reliability of such services at the affordable cost and to realize the basic need of the common man. गवर्नमेंट ने एनईजीपी को अप्रूव किया था 18 मई 2006 में और इसमें उस समय टोटल 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे, एमएमपीज थे और 8 कंपोनेंट्स थे। और ईयर 2011 में 4 प्रोजेक्ट जो कि हेल्थ, एजुकेशन, पीडीएस और पोस्ट से जुड़े हुए थे, इसको इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू मेक दिस 27 MMPs to grow to 31 MMPs. The government has introduced the approval of the vision, approach, strategy, and key component, implementation, methodology, and management structure of NEGP. हालांकि ये अप्रूवल किसी भी तरीके से फाइनेंशियल अप्रूवल को कंस्टिट्यूट नहीं करता है इन द कंपोनेंट्स ऑफ MMPs, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं एमएमपीज में, ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा, स्टेट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, स्टेट डिपार्टमेंट्स के द्वारा और सुटेबली ऑगमेंटेड है और इन्हांस्ड किए गए हैं इन ऑर्डर टू अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईजीपी। तो ई गवर्नेंस को होलिस्टिकली प्रमोट करने के लिए इन ऑर्डर टू मैनेज इट टू द वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स इसके अंदर डेवलप किए गए हैं और सपोर्ट करता है ये in order to develop the infrastructure, and the major infrastructure component इसमें कौन कौन से? स्टेट डाटा सेंटर्स, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान, कॉमन सर्विस सेंटर्स CSCs, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रज्ञा केंद्र, मिडिलवेयर गेटवेज, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे NSDGs, स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवेज SSDG and mobile e-governance service delivery gateways. Important support component इसमें क्या क्या है? तो इसमें कोर पॉलिसीज और गाइडलाइंस इंक्लूडेड है, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स, सिटीजन इंगेजमेंट, सोशल मीडिया,
as well as the standard related to the metadata interoperability, enterprise architecture, information security, and new initiative include the framework of the authentication, that is ePraman and GI Cloud. अब ePraman और GI Cloud क्या है? GI Cloud is basically cloud computing for e-governance project and ePraman is an electronic identity provide करता है ये. And by this we came to an end of this video. Thank you for your timing.